Hello friends, in this video we are going to talk about efficiency. Efficiency is a very general concept we use in our day-to-day lives. Let's say there are two students, one student sits for a longer duration, let's say 3 hours a day, and he is performing an average of like 60-70%, and the other student sits only for 1.5 hours a day but he is performing 80 plus. So what do we say? The student who is sitting for lesser duration has higher efficiency, has better retention, has better focus. These are the general terms that we use. So in physics, efficiency simply means output upon input. Then you want to associate it with energy, okay, then it is energy output upon energy input. You want to associate it with power, just by dividing the time, you can say it is power output upon power input. ठीक है, ये एक fraction है, याद रहे, this is a fraction, but generally it is expressed in percentage. ठीक है, so let's take an example to solve this. मान लो there is a dam whose height is 100 meter. From there water is falling on a turbine. ठीक है, now this turbine moves. So let's see what all energy is being converted into which form, and what do you mean by 40%? The question says there is only 40% conversion of energy into electrical energy form. Okay, it is given that find the electric energy produced in 1 hour provided इतना liters of water falls in 1 hour. ठीक है, तो चलो उसको सॉल्व करके देखते हैं. मान लेते हैं we take 1 hour as a reference. ठीक है, I decide the point A, point B and point C. Point A पे water start flowing. ठीक है, वो वहां से नीचे आता है. At point B, what happens? Water acquires some velocity. Velocity means it acquires some kinetic energy. ठीक है? Now this energy divides into two parts. One is electrical energy and one is flow. Water continues to flow with a lesser energy. So this efficiency they are saying 40%. तो आप बताओ जो वाटर फ्लो करने मिलेगा वो कितना परसेंटेज जाएगा? 60%. दैट मीन्स 60% ऑफ द टोटल एनर्जी इज यूज्ड फॉर द वाटर टू कंटिन्यू द फ्लो इनटू द स्ट्रीम. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल सेज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. बताओ विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन इट इज फॉलिंग डाउन? इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स. वर्क डन बाय ग्रेविटी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. And it is just falling, so we assume कि डैम में जब पानी रुका हुआ था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज 0. ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू द हाइट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, हाउ मच इज द एनर्जी, सॉरी हाउ मच इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? मास. We have done in the previous question that 10 to the power 7 liters of water means 1 liter का कितना होता है? 1 kg. तो 10 to the power 7 liter का कितना हो जाएगा? 10 to the power 7 kg. 10 to the power 7 kg into gravity is 10 into height is 100 is final kinetic energy. You see how much is this? 7, 8, 9, 10. 10 to the power 10 is the final kinetic energy. ठीक है, अगर यहां पे मैं वेलोसिटी निकालना चाहूं तो वेलोसिटी निकल सकता है m गोज अवे, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, v विल बी √2gh. तो वेलोसिटी कितना आएगा देखो, 2 इंटू 10 इंटू 100, 10 √20 मीटर पर सेकेंड. √20 को क्या लिख सकते हैं? 4 5 20, तो 2 बाहर आ जाएगा, 20√5 मीटर पर सेकेंड. सो हमने देखो वेलोसिटी भी निकाल दिया और काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दिया. नाउ यू सी केयरफुली द काइनेटिक एनर्जी दैट द बॉडी हैज एट बी इज कन्वर्टेड ओनली 40% विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो 40% का मतलब फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? सी वी आर डीलिंग विद ओनली एफिशिएंसी का फ्रैक्शन, वी डोंट डील विद परसेंटेज. So I convert that into fraction. This is my efficiency. This is energy output.
तो जब मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करता हूं, दैट इज द कन्वर्जन फैक्टर. सो हु इज माय आउटपुट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Energy output upon energy input. Which is the energy input? The energy that it had at B. B पे कितनी एनर्जी है उसकी? पूरी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 10. तो देखो एनर्जी आउटपुट कितना आ गया? 10 रेज़ टू पावर 10 इंटू 0.4. तो 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 जूल. एंड दिस आउटपुट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो चलो इसको वापस समझते हैं. द क्वेश्चन वाज कि डैम से पानी गिर रहा है, ठीक है, एट द हाइट ऑफ 100 एंड दिस वाटर एक्वायर्स सम वेलोसिटी हियर. नाउ देयर इज सम काइनेटिक एनर्जी एट बी. नाउ द काइनेटिक एनर्जी एट बी, दिस काइनेटिक एनर्जी का वाटर इज फॉलिंग ऑन द टर्बाइन एंड द टर्बाइन इज कन्वर्टिंग दिस काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय रिड्यूसिंग सम ऑफ इट्स फ्लो. ठीक है, so the total work done by the gravity from A to B is nothing but the kinetic energy. Now this kinetic energy has two parts. 40% of it is converted to electrical form and 60% is converted to the flow. पानी गिरा, turbine move किया, but water continues to move. That continues to move is the flow energy. That is 60%. ठीक है, so let's see कितना electrical energy produce हुआ. First of all we identify कि total energy कितना था B के पास. When it reached B, how much energy did it possess? So work done by all the forces equal to change in kinetic energy. Who is doing the work done? Gravity. So force into distance, work done by the gravity, is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy, which we take it as 0 because at the top of the dam water is practically not moving. Okay, now if I find out the kinetic energy comes out to be 10 is to power 10 joules. कितना आया? 10 is to power 10 joule. Now this kinetic energy का 40% is converted to electrical energy. What is the formula of efficiency? 40 by 100 is energy output upon energy input. तो बताओ कितना energy output आया मेरे को? 4 into 10 is to power 10. इसको आप normal percentage के तरीके से भी कर सकते हो. कैसे? I need to find out 40% of total energy. तो देखो 40 by 100 into total energy कितना है? 10 is to power 10. You still get 4 into 10 is to power 9 joule. You can do it by regular percentage method or you can do it by efficiency method also. ठीक है? So we have understood how to use efficiency into our regular questions. Okay? And when we start power may also we will do some questions on efficiency so that you can get the feel of how to use the efficiency. Okay, thank you so much.